झारखंड की राजधानी रांची में क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य बात यह रही कि नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रमनाथ सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हुए और सभी ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह से वुमेन पर जो क्राइम की घटनाएं हो रही उसको किस तरह से रोकथाम किया जाए, इस पर चर्चा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय श्री जस्टिस अमानुल्लाह साहब, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री महेश सोनक जी, मंच पर आसीन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री सुजीत नारायण प्रसाद जी, मंच पर ही आसीन झारखंड राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री उमाशंकर जी, झारखंड उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, झारखंड राज्य सरकार के महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन जी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, अन्य माननीय अधिवक्तागण, सभी रिसोर्स पर्सन्स जो बहुत ही विशिष्ट हैं, आज के इन 3 टेक्निकल सेशंस के लिए आए हुए हैं, वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची यहाँ मौजूद हैं, मेंबर सेक्रेटरी झालसा मिस्टर स्थाना, झारखंड राज्य के और सभी विशिष्ट न्यायिक अधिकारीगण, झारखंड राज्य के प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से जो आए हुए हैं सब लोग, सभी डीएलएसएस के होल टाइम सेक्रेटरीज, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, अन्य आए हुए अतिथिगण, ये मेरी पहली विजिट है झारखंड स्टेट की और रांची की। मैं पहले कभी नहीं आया यहाँ पर। जब आपके दोनों जुडिशल ऑफिसर्स जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बोलना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि मैं भी उसका फ़ायदा उठा लूँ और मैं भी आप लोगों से हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में बातचीत करूँगा। थोड़ा कार्यक्रम हमारा विलंब चल रहा है और इतनी सारे टचिंग मोमेंट्स यहाँ निकले हैं अभी। जैसे हमारा वेलकम हुआ बाहर, बहुत ही वार्म वेलकम था और जिस तरह से सब झारखंड के लोगों ने मेरा स्वागत किया, बड़ा अच्छा लगा। पत्ते की टोपी पहनाई, माला पहनाई, टीका कराया। फिर यहाँ पे अभी हमने विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन जो दिए, झरिया देवी की कहानी सुनी। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये कोलोकम ऑर्गेनाइज़ किया है झालसार और डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने। मैं सुन रहा था, सब लोग बातें कर रहे थे। मैंने सोचा था झालसा के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, तो आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने सब कुछ बता दिया। मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं बताने के लिए। कुछ डेटा हमने इकट्ठा किया था, हम सोचा था कि कुछ हम भी बोलेंगे। आपके मुख्य न्यायाधीश ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत गहरी बातें कही उन्होंने, बहुत सरल तरीके से। हमारे छोटे भ्राता जो दिल्ली से आए हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री अमानुल्लाह साहब, बहुत पैशनेट और दिल से बात करते हैं और काम करते हैं। तो उन्होंने भी अपनी दिल की बातें आप लोगों के सामने रखी। तो उन्होंने कुछ निवेदन भी किया है हम लोगों को। हम निवेदन तो नहीं, उसको आदेश मानते हैं उनका। और हम झालसा के
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से और मेंबर सेक्रेटरी से ज़रूर निवेदन करेंगे, और प्लस अपने मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली में नालसा के, कि जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं उसका हम लोग ज़रूर अनुकरण करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब थोड़ी देर अंग्रेजी में सुन लीजिए, हिंदी की बात पूरी हो गई। So today we have gathered here at this colloquium to deliberate upon the issue of crimes against women, with a special emphasis on witch hunting, an issue that has particular relevance in the state of Jharkhand. India is a vast and extraordinarily diverse country where each region carries its own history, its own fault lines, and its own forms of injustice, often invisible to those who do not live within them. Conferences of this kind, organized by state legal service authorities around a focused and grounded theme, bring together those who engage with these realities on a daily basis and create a space for honest reflection on what has worked, what has not, where the gaps persist, and what must change. Such candid context sensitive deliberation is not a mere formality, it is the foundation of effective and responsive justice. I am deeply grateful to the Jharkhand State Legal Services Authority and the Department of Women, Child Development and Social Security, Government of Jharkhand, for convening this colloquium to bring together judges, administrators, advocates and civil society around a cause that requires an urgent attention. Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India guarantee every citizen equality before the law, freedom from discrimination and the right to life with dignity. And yet, the lived reality of women across India, across geographies, classes, castes and communities continues to reveal a profound distance between that constitutional promise and its actual fulfillment. Crime against women today are symptoms of a deeper structural reality in which the subordination of women has been so normalized for so long that violence against them is treated in too many quarters as unremarkable and as something to be managed rather than eliminated. What compounds this is the vast gap between the commission of these crimes and their reporting. Fear of stigma, economic dependence on the perpetrator, distrust of institutions, and the weight of social pressure conspire to keep the true scale of violence against women invisible. This is the challenge that confronts not just law enforcement, but every institution represented in this room. Legislative reforms over the past 2 decades have strengthened protections, but the true measure of a justice system is not the quality of its laws. It is whether those laws reach the woman who needs them in the place where she lives and at the moment she is most vulnerable. By that measure, there is much that remains undone. Within this broader territory, witch hunting occupies a category of its own. It is not merely a regional anomaly or a law and order problem, but one of the most visceral, dehumanizing expressions of gender violence that persists. In Jharkhand, this issue has been particularly persistent. Crimes against women do not present themselves identically across every part of this country. They take the shape of the society that produces them. In Jharkhand, that shape is witch hunting, and it must be named, understood, and confronted directly. On a surface level, witch hunting presents itself as a matter of belief that illness, death, failed crops, or misfortune are caused not by nature or circumstance, but by a woman in the neighborhood who has cast a spell. But to accept that framing is to misunderstand the practice entirely. Witch hunting is not, at its root, about belief. It is about social hierarchy, about power, and about patriarchy. The women who are branded as witches are not random. They are women who are vulnerable or who have refused,
in some way to remain subordinate. The label of Dian is the instrument by which such women are silenced, dispossessed, and destroyed. What makes witch hunting so resistant to intervention is the depth at which it is embedded. It is not merely an individual belief, rather exists in community structures, in social hierarchies, and in the silence of those who witness it and say nothing. The branding of a woman as a witch is rarely a spontaneous act. It is a social process that involves accusation, community sanction, and collective violence, sometimes over days. It is this collective character that makes it so difficult to prosecute, since witnesses are embedded in the same community as perpetrators, and the pressure to maintain silence is immense. Jharkhand enacted the Prevention of Witch Dian Practices Act 2001, which was recognition that this demanded state intervention. And though we must acknowledge that, acknowledgement in itself is not action. Prosecutions remain rare. Convictions are rarer still.